Good evening, dear students. Yesterday we have discussed some of the things, basic things, okay, which you will be requiring in kinematics. Okay, now going in the same line, okay, आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ specific type of motions like rectilinear motion. Fine. Rectilinear motion is, when a single point mass is moving along a straight path. Okay, single point mass. Okay, that is rectilinear motion. Fine. And if so many particles together, like cluster of particles, okay, bind it together, the system is moving along a straight path. System of point masses is moving along a straight path. So this type of motion is called as translatory motion. Translatory motion mean single point mass going along a straight path. Rectilinear motion, so many particles together, clustered, binded together, okay, going along a straight path is translatory motion. As written, motion when a single point mass moves along a straight path. एक ही point mass in the body that is of point mass type. Okay, that is a rectilinear motion, and the other is translatory motion when so many particles which are binded together are going along parallel straight path. मतलब every particle which is clustered, which is binded together, okay, they all are moving along straight path, and those straight paths are parallel to each other. Okay, circular motion and rotatory motion. Circular motion is when a single point mass moves around circular path. Single point mass mean the body is a point mass. Okay, and other way, if we are saying when a single point mass moves around a fixed point, keeping itself always at a fixed distance from the fixed point, that is called as circular motion. When a single point mass moves around a circular path, circular motion. Okay, specifically if we are going, when a point mass body moves around a fixed point center, moves around a fixed point in such a way, always keeping itself at a fixed distance, sometime here, so that this distance is fixed distance, always keeping itself at a fixed distance from the fixed point. Okay, that fixed point is called as center, and this fixed distance at which the particle is keeping itself is called as radius. Rotatory motion or rotational motion. Okay, this is when system of particles all together are going around. So many particles, okay, together are moving around a circular path. System of particles binded together. Okay, point masses, cluster of point masses together going around circular path. That particular motion, okay, is rotatory motion or rotational motion. Circular, when I am saying, okay, I am saying the same thing, motion around a fixed point and body keeping itself always at a fixed distance. When
a cluster of point masses or system of point masses which are binded together, okay, moves around a fixed point, such that all particles together moves on concentric circular paths simultaneously. इकट्ठे चल रहे हैं सारे, okay? ठीक, मीन सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, अगर हम दोनों का डिफरेंस लें, सर्कुलर मोशन जो है वो सिंगल पॉइंट मास मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, और अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन की, उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ्स के ऊपर टुगेदर मूव कर रहे हैं. होप दिस इज क्लियर. नाउ oscillatory and vibratory motions. Okay, oscillatory motion. This is a fixed point. Body is going this way, returning from here, coming again to fixed point, then going this side, and then back. Mean left, right around a fixed point. Forward, backward around a fixed point. Okay, and up, down around a fixed point. Okay, this is oscillatory motion, but the condition, one more condition is there. These motions which are happening around a fixed point, okay, up and down, left and right, back and forth, okay, repeating itself after particular interval of time. What I said, the motion, okay, is repeating, यहां से यहां 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 एक वाइब्रेशन, उसके बाद जो यहां तक टाइम लगा, अगली वाइब्रेशन में भी सेम टाइम, उसके बाद अगली वाइब्रेशन में भी सेम टाइम, repeating itself after particular interval of time. Mean a to and fro, backward, forward, up and down motion which is happening after particular interval of time, that motion is called as oscillatory motion. Okay, अब अगर हम oscillatory motion में oscillations को छोटा करते हैं, ठीक है, तब वो स्पेसिफिकली बन जाता है वाइब्रेटरी मोशन. ओके, वाइब्रेटरी मोशन. और अगर इसी में आप ये देखो, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, अब ये यहां से यहां जा रहा है और वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है? एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्कआउट करती है इसके अंदर, ठीक है. तो अगर वो जो अपना ऑसिलेटरी मोशन है उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब हम इस ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं. When a body moves to and fro, back and forth, up and down around the fixed position between fixed extremes and repeat itself after particular interval of time, okay, that motion is called as oscillatory motion. Okay, one more thing, a motion which repeat itself after particular interval of time, we are least bothered here, okay, कि fixed point के around है वो, to and fro, back and forth हो या ना हो, no problem, लेकिन it should be repeating itself after particular interval of time, that is called as a periodic motion. Fine, mean oscillatory motion is a periodic motion. Now oscillatory motion, as I told you, oscillatory motion with very small amplitude is called as vibratory motion. Fine, and oscillatory motion in which restoring force associated with motion is directly proportional to displacement, okay, that oscillatory motion will be called as the simple harmonic motion. Okay, now here in the things discussed, I have used point mass so many times. तो बेसिकली ये पॉइंट मास है क्या है, किस बॉडी को आप पॉइंट मास एज्यूम कर सकते हो और किस बॉडी को आप पॉइंट मास एज्यूम नहीं कर सकते. गॉट इट? सम जनरल एग्जांपल्स आई एम टेकिंग. अर्थ,
observed from far planet. Far planet, okay, is a point mass. Is a point mass. Okay, but Earth observed from, from a point, okay, sitting on Earth. जब आप अर्थ के ऊपर ही कुर्सी लगा के बैठे हुए हो, अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या पूरी अर्थ सिंगल स्लॉट में, सिंगल व्यू के अंदर देख सकते हो? कोई छोटा सा पीस ही देख पाओगे आप लोग. ओके, अर्थ ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अर्थ. ओके, mean point is on the earth and we are observing while sitting on that point, like sitting in garden and observing earth. बहुत थोड़ा सा पार्ट वी विल बी एबल टू सी, हम देख पाते हैं. ओके, उस सिचुएशन में योर अर्थ इज नॉट अ पॉइंट मास. फाइन. अ ट्रेन, मूविंग बिटवीन दिल्ली एंड अंबाला is a point mass. Train moving between Delhi and Ambala is a point mass, while a train moving along a platform and the observer is standing on the platform. ठीक है, ऑब्जर्वर जो है, ओके, ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ ट्रेन को देख रहा है. फाइन, तब क्या वो पॉइंट मास कहेगा ट्रेन को? कहेगा इतनी बड़ी ट्रेन. A train moving along platform, it is observed by a person standing on platform. Okay, this is a situation. Okay, now it is not a point mass, not a point mass. So what you have understood? Here we are taking train as point mass. Here we are saying the same train is not a point mass. We have taken example of earth. ठीक है ना, अर्थ ऑब्जर्व्ड पॉइंट मास, अर्थ ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, नॉट अ पॉइंट मास. बॉडीज आर सेम, okay, but the situation is defining that the body can be taken as a point mass or not. Okay, so now I am defining that particular situation, okay, in which particular situation we will be able to take a body as a point mass, or in which situation we will not be able to take it. Okay, now a body can be taken as a point mass when take example of that train wala, that Ambala, we are observing this whole length, Ambala to Delhi, nearly 200 kilometer from here to here. 200 kilometer we are observing. Okay, and train is going somewhere like this. ट्रेन का लेंथ कितना होगा? हाफ किलोमीटर है ना. ओके, ट्रेन का लेंथ कितना होगा? एट द मैक्सिमम हाफ किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर. ओके, इससे ज्यादा तो नहीं होता है. तो दैट 100 मीटर और 200 मीटर विद रिस्पेक्ट टू 200 किलोमीटर बहुत स्मॉल फैक्टर है. ओके, इस कारण से हम क्या करते हैं, ट्रेन को पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं. तो व्हेन द distances traveled by the body are much larger in comparison to the size of the body. In comparison to the size of the body, train 100 meter. 100 meter is much smaller in comparison to 200 kilometer. Okay, so in that situation we can consider the body as point mass. When distances under observation, okay, distances observed are much larger in comparison to size of the body, okay, the body can be taken as point mass. अंबाला से दिल्ली जब हम मेजर कर रहे हैं, पूरा डिस्टेंस अंडर ऑब्जर्वेशन है,
200 किलोमीटर, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है एट द मैक्सिमम 100 मीटर, 200 मीटर. तो दैट size of train is much much smaller in comparison to distances under observation. Therefore in that situation we are able to take that train as point mass. Okay, fine. लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म के अलॉन्ग बात करें, प्लेटफॉर्म कितना होता है? प्लेटफॉर्म इज एट द मैक्सिमम हाफ अ किलोमीटर, 700 मीटर एट द मैक्सिमम. ओके, तो उसके कंपैरिजन में ट्रेन का साइज कितना है ना? तो दैट इज कंपेरेबल बेसिकली, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है. फाइन, इस कारण से वहाँ पे हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं एज्यूम कर सकते. नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बड़ा कॉमन सा टर्म है हमारे फिजिक्स में. देखो, आप लोगों ने एक्स वाई एंड जेड एक्सेस स्टडी किया हुआ है. एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. इट इज लाइक दिस, लेकिन पेपर पे हम इस तरह से शो करते हैं, जेड एक्सेस. ओके, ठीक. एनी स्पेस ओके in which we are able to define the movement of object. Okay, movement of object with respect to axis drawn xyz in that particular space with time. Okay, what I said, कोई बॉडी है इस स्पेस के अंदर मूव कर रही है, उस बॉडी का मूवमेंट जो कोऑर्डिनेट है उसके, ठीक है, जो भी पोजीशन है उसका किसी भी टाइम के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ उस स्पेस में जब हम उसके लोकेशन कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सके, उसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सके, ठीक है, उसका वेलोसिटी डिफाइन कर सके. फाइन, तो दैट स्पेस in which we are able to define the kinematic variables, okay, fine, of the body with time, that space bounded by the axis. okay, space bounded by the axis. देखो, सिंगल अगर बात करते हैं, सिंगल होता है एक्सिस, ओके, और एक्सेस. फाइन, मैनी ये सिंगल है, one many. तो space bounded by xyz in which the location, the displacement, the velocity of the body of any object can be defined with time is called frame of reference. System of coordinates, okay, system of coordinate axis attached to an observer in which the position, distance traveled or velocity etc, acceleration, speed, ठीक है ना, of the observer, of the object can be defined with time. okay, तो वो जो स्पेस बाइंड कर रही है, जो तुम्हारी एक्सिस, ओके, एक्सिस का कॉम्बिनेशन स्पेस बाइंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. ओके, वन आर inertial frame of reference. Another one is non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Inertial frame of reference basically inertial and non-inertial. इसमें differentiation जो होता है वो न्यूटन लॉज के बेसिस पे करते हैं हम. That frame of reference in which Newton laws hold good. Inertial frame of reference. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन है, ओके, विच इज ईदर एट रेस्ट और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा है, ठीक है ना.
frame of reference in space bounded by xyz axis, frame of reference is either at rest or it's moving with constant velocity. It's moving with constant velocity. Okay, moving with constant velocity. You can take example of a bus. A passenger is sitting in the bus. Bus is at rest. Bus is at rest. Okay, is taking some observation. Okay, बस के अंदर ही किसी को देख रहा है. फाइन. तो बस उस पर्सन, वो जो बैठा हुआ है, ओके, ऑब्जर्वर, ठीक, वहाँ पे बस जो है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगा. यही बस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर को बैठा हुआ है अंदर, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पड़े 60 किलोमीटर पर आवर, देन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग समथिंग, ओके, इनसाइड बस और आउटसाइड बस, ठीक है, लेकिन बस में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. फाइन. आफ्टर दैट इज non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference basically is that frame of reference जिसमें Newton laws they doesn't hold good. They doesn't hold good. Observer sitting in the bus. Okay, sometime that bus, driver is accelerating the bus. Sometime, by applying brake it is slowing it down. Okay, तो बस में हमेशा एक acceleration है, एक retardation है. Okay, तो frame of reference, okay, is not at rest or moving with uniform velocity. Fine, it is accelerating when frame of reference is accelerating. Okay, ठीक है. So the frame which is accelerating, that is basically non-inertial frame of reference. Hope this is clear. ठीक है, तो these are some basic things, okay, जिनका हमें जरूरत पड़ेगा to study mechanics in a good way. Okay, और अभी हम इसको काइनेमेटिक्स हेड के अंदर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, जो कि सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है. फाइन, तो होप this is clear to you. Thank you. Have a nice day.